I welcome you all to this mathematics class. I am Miss Vandana Gupta, Assistant Professor of Mathematics. We have started with Unit 4 of Section 2 Statistics, that is Elementary Probability Theory. There are two subunits in this unit. First one is Probability Theory and the second one is Random Variable. So we had already started yesterday with the first subunit, that is Probability Theory. I have introduced you with the concept of random experiment, which is also called as trial. What is a random experiment? An experiment whose outcome is not certain is called as a random experiment. If you remember, I had given you one example yesterday that if you ask 3 people or even any number of people to take a vessel filled of water and heat it, then everybody will give me the same result. Everybody will tell me that when they heated the water started boiling and it started converting into steam or gaseous form, okay, from liquid to gas form. So this type of experiment whose result is fixed is called as a scientific experiment. But then there are some experiment whose result is not fixed, not certain, मतलब नहीं मालूम है क्या रिजल्ट आएगा. ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. So I had given you some examples of random experiment. Look at the first example, tossing an unbiased coin. If you toss a coin, you do not know whether it will land into head or tail. So you do not know the result beforehand. Okay, so that is an example of a random experiment. Then the second example, rolling a fair dice. If you roll or throw a dice which has got 6 faces and the numbers 1 to 6 are written on the faces of the dice. Okay, if you throw this dice, you cannot say with surety that you are going to get the result or the number say 5 on the uppermost face of the dice. So the result is different for different people. It is not fixed. So again, this is an example of a random experiment. Then again, I gave you one more example that if you have the playing cards, there are 52 playing cards. If you just select one card out of that, you do not know which card will come in your hand. Okay. So this is again a random experiment. See, though we do not know that which outcome will come, but we certainly know what outcome can come. Means we know what are the possible outcomes of the random experiment. If we collect all the possible outcomes of a random experiment, what we get is called as a sample space. So that is what we have defined here. Sample space is what? It is the set of all possible outcomes. Look at this, all possible outcomes. So this is very important here. All possible outcomes of a random experiment is called as a sample space, and it is denoted by capital S. All the possible outcomes are called as sample points, and the number of points or number of sample points in a sample space is denoted by N of S. N of S means N for number of members in S. Okay, that is called as that is denoted by N of S. So I had given you some example. Look at the first example. If you throw a dice, throw a coin. If you toss a coin, you know that either it will land into head or into tail. So these are the only possible results which can come. So if I make a set, and in that set, if I write down all the possible results of this experiment, which experiment? Tossing a coin. Then that set I will call as a sample space. So sample space will be either it will land into head or into tail. What is this? H stands for head and T stands for tail. You know that if coin has 2 faces, correct? One is called as a head, the other one is called as a tail. So these are the possible outcomes of the random experiment of tossing a coin. Now see, H and T, these are the possible
results, possible outcomes. They are called as sample points. What are they called? Sample points. Sample point means the possible outcomes or possible results of the random experiment. That they are called as sample point. And the set of sample point is called as a sample space. So S is called as a sample space. Now number of sample points in the sample space. कितने sample point है इसमें? 1 and 2. So that is denoted by N of S and it is 2. So there are 2 sample points in the sample space S of the random experiment tossing a coin. Second example what I took here was rolling a fair dice. If you roll a dice, you know that if you roll a dice, then you know that what are the possible outcomes of that experiment. Take it here. Okay. So we have seen for an experiment of tossing a coin, the sample space will be H and T. Now let us take the second experiment. What is the second experiment? Second experiment is rolling a dice. Suppose you roll a dice. You know that how many possible results are there for this experiment of rolling a dice? You know that there are 6 faces of the dice and the numbers 1 to 6 are written on these faces. Okay. Dice looks like this. There are 6 faces and the numbers 1 to 6 are written. For example, on the top 1 is written, here it is 6. Maybe on this side it is 2. Maybe this side it is 3. Maybe here the back side, okay, maybe 4. And then top, this one, this side, and one more side. Right? So one, the top side, this, and the back side, and the bottom side. Right? So इस तरह से there are 6 faces. So when you throw this dice, you know this, that what is my experiment? Throwing a dice. I know that what are the possible results of this experiment? It may land in 1 or in 2 or in 3 or in 4 or in 5 or in 6. So this is this set of all the possible outcomes of this experiment of throwing a dice is called as a sample space and it is denoted by capital S. What are these 1, 2, 3, 4, 5, 6? These are called as sample points. So possible results of the experiment are called as sample points. The collection or the set, मतलब अगर आपने सारे sample points को लिखा separated by comma and in the curly bracket, then that gives you a set. So this set is called as a sample space. And how many points are there in the sample space? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we say that number of points in the sample space S is 6. Okay. In a similar way, if you have got 2 coins, and if I ask you, what is the sample space of tossing 2 coins? So here I am tossing 2 coins. So let us see what are the possible result. It may happen that the first one lands in head. 2 कॉइन को मैं साथ में टॉस कर रही हूँ, तो पहले वाले के ऊपर एच आया, हेड आया, दूसरे वाले के ऊपर हेड भी आ सकता है या तो टेल आ सकता है. तो पहला पॉसिबिलिटी हो गया हेड हेड, दूसरा हो गया हेड टेल. मुझे सारे पॉसिबिलिटीज देखना है. तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में टेल आए और दूसरे वाले में हेड या दूसरे वाले में टेल. तो टी एच एंड टी. सो व्हाट आर ऑल द पॉसिबिलिटीज? Either both will land in head, HH, or first one in H, second one in T, HT, or TH, first one in T, second one in H, or fourth TT, both in T. So number of sample points are 4. So N of S is 4. So this is the sample space for tossing 2 coins. 2 coins together. Okay. So this is the sample space for the experiment of tossing 2 coins together. Now, if you remember in the homework, I had asked you
to write down the sample space of the random experiment of tossing three unbiased coins together. See here. So this some students they have shared with me and they could not do it properly or correctly. So let me tell you how to do that. Okay, look at here. I'm tossing three coins. So you have to find out all the possible results of that experiment. So how to count that? There should be a systematical manner of counting, which we have learned in permutation combination. Okay. So that is the reason why we teach permutation combination before probability. Look at here, there are three coins. So let us suppose that the first coin goes in head. Okay. So what are the possibilities for the second and the third coin? See, this is how you have to think in a logical way. Suppose the पहले वाला कॉइन में हेड आया, दूसरे वाले कॉइन में क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. पहले वाले को मैंने फिक्स कर दिया हेड, दूसरे में हेड भी आ सकता है या तो टेल आ सकता है. ठीक है. अब देखो दोनों हेड है तो थर्ड वाले के लिए क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? या तो वो हेड में जाएगा या तो वो टेल में जाएगा. तो अगर थर्ड वाला भी हेड में गया तो एच 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 मिलेगा मुझे, और अगर थर्ड वाला टेल में गया तो मुझे एच एच टी मिलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग, हाउ यू हैव टू थिंक? पहले वाले को आप फिक्स कर दो हेड. अब सेकंड वाले के लिए देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर इट विल गो इन हेड और इन टेल. सो एच एंड टी और एच एंड एच. अब ये दोनों फिक्स्ड हो गए तो थर्ड वाले के लिए क्या क्या चांस है? आइदर इट विल गो इन हेड और इन टेल. सो एच 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 और एच एच टी. Okay. Now first one is in head and the second one in T. First one head and second one in tail. So third one ke liye again there are two choices. Either it can go in head or it can go in tail. T. So I will have four choices: HHH, HHT, HTH and HTT when I fixed H on the first place. मतलब पहला coin अगर head पे गया है तो मुझे ऐसे चार different choices होंगे मेरे पास. देखो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी. सिमिलरली अगर फर्स्ट वाला कॉइन टेल में गया है तो भी मुझे चार मिलेंगे. कैसे? सपोज फर्स्ट वाला टेल में गया तो सेकंड फर्स्ट वाला टेल में, आई फिक्स दैट फर्स्ट टी. ओके, फर्स्ट वाला टेल में मैंने फिक्स कर दिया टेल को. तो सेकंड के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? सेकंड वाला या तो हेड में जाएगा और या तो किस में जाएगा? या तो टेल में जाएगा. करेक्ट. अगर वो हेड में गया मतलब फर्स्ट वाला टेल में और सेकंड वाला हेड में, तो थर्ड के लिए क्या क्या ऑप्शन है? या तो वो हेड में जाएगा या तो वो टेल में जाएगा. तो टी एच एच और टी एच टी. देन फर्स्ट वाला टेल में और सेकंड वाला भी टेल में, मतलब फर्स्ट वाला टेल में सेकंड वाला भी टेल में. तो थर्ड वाले के लिए क्या क्या ऑप्शन है? आइदर इट कैन गो इन हेड और इट कैन गो इन टेल. So these are the 8 options, all possible. So number of points in S will be HHH, this one, HHT, this one, HTH, HTT, THH, THT, TTH, and TTT. So number of points in the sample space S is 8. So this way, if you start thinking and counting in a systematic way, then you will get all possible. अगर आपने हैफर्जेटली लिखा यानी पहले एच एच एच, फिर टी एच एच, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी, और इस तरह से अगर आपने लिखा तो ये हो सकता है कि आप पूरे ना लिख पाए या किसी को रिपीट कर दें. अब इनमें देखिए कोई भी रिपीट नहीं है और हमने पूरे भी लिख दिए. तो आपको इस तरह से सिस्टमैटिक वे में काउंटिंग करना होता है. तो इफ यू थ्रो थ्री कॉइन्स टुगेदर then the sample space of that experiment will be this. It's a very 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 important problem. Okay, so number of points in the sample space will be 8. अब इस तरह का प्रॉब्लम आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. इफ यू थ्रो थ्री coins together, then number of points in the sample space S is 4 choices given, 1, 6, 8, 2. So your answer should be 8. Unless you know, how will you do that? इसलिए मैथ्स में एमसीक्यू में भी आपको थिंक करना है, सोचना है. बिना दिमाग लगाए you will not be able to solve even MCQ problems in mathematics. Okay, so this is the way to calculate. Okay, then we have defined these are the examples
वो जो मैंने दिए ऑलरेडी वी हैव डन दैट. हाँ, सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो उसमें HH, HT, TH एंड TT, the number of points will be 4. सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग 2 फेयर डाइस. अब यहाँ पर 2 डाइस को फेयर को रोल कर रही हूँ, तो मुझे कितने रिजल्ट मिलेंगे पॉसिबल? ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स. या तो दोनों में 1 1 आएगा, या तो पहले में 1 दूसरे में 2. पहले में 1, तो 1 को पहले मैंने फिक्स कर दिया, पहले वाले डाइस को. कैसे काउंट करेंगे हम? पहले वाले डाइस को आप 1 में फिक्स कर दो, तो दूसरे डाइस के लिए कितने पॉसिबिलिटीज? आइदर इट कैन आल्सो गो इन 1 और इन 2 और इन 3 4 5 और 6. देन यू चेंज द फर्स्ट डाइस. सपोज द फर्स्ट डाइस में 2 आया, ऊपर 2 आया, तो हमारे पास सेकंड डाइस के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? 2 1 2 2 2 3 2, मतलब इट कैन लैंड इन आइदर 1 2 3 4 5 6. So you will have the choices 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6. In this way, the last one, first dice in 6, the second dice in 1. So 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. So in this way, I have written all the possible outcomes of the experiment of throwing 2 dice together. And they are how many in number? They are 36 in number. So n of s is 36. एक डाइस को रोल करते हैं तो n of s is 6 1 2 3 4 5, लेकिन 2 को करते हैं साथ में तो 36. Okay. Now we have defined event. What is an event? Any subset of sample space is called an event. See, event और sample space में क्या difference है? Sample space क्या होता है? It is the set of all possible outcomes. सारे possible जो हो सकते हैं, उस वो सेट को हम sample space बोलते हैं. लेकिन event को में हम सारे नहीं लेकर a particular outcomes. So an event is a set of particular outcomes of a random experiment. तो event जो होता है, it is a subset of the sample space. So event is a subset of the sample space. And this is the symbol used for subset. A is a subset of S. So any subset of the sample space is called an event. A is a subset of S. S is a sample space and A is a event. Okay. So I have tried to explain you with the help of this diagram. The bigger rectangle is the sample space and A is an event. It's a part of S. So event means it's a part of sample space. Let us look at the example. Example of event. Suppose I take an experiment of, in an experiment of rolling a dice, getting an odd number on the uppermost face of the dice is an event. यानी अगर मैंने डाइस को थ्रो किया और मैं बोल रही हूं कि मेरा इवेंट क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर. ओके, अब मुझे मालूम है इस वाले एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होता है. आई नो दैट सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस इज 1 2 3 4 5 6. करेक्ट. ओके, नाउ माई इवेंट इज व्हाट? गेटिंग एन ऑड नंबर. यानी मैंने डाइस को थ्रो किया और मुझे ऑड नंबर आया. ऑड नंबर मतलब द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2. तो इनमें से कौन से नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है? वो अगर आएंगे तो मैं बोलूंगी मेरा इवेंट अकर हो गया है. तो 1 3 and 5. So this is my event A. Okay, and A is a subset of S. Yes, A is a subset of S. मतलब A is a part of S. Subset मतलब it's a part of S. Okay. Similarly, in the second example, in an experiment of rolling a dice, getting an even number on the uppermost face of the dice is also an event. यानी मैं सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स नहीं ले रही हूँ. कौन से आउटकम्स ले रही हूँ? जब मुझे इवन नंबर आएगा. तो इवन नंबर कौन कौन से हैं इसमें? 2 4 and 6. So that is my event B. And how many points are there in B? 3 points. So I hope you have understood the difference and the meaning of sample space and event. Sample space matlab set of all possible outcomes, and event means set of some particular type of outcomes. Okay, not all. Now we have seen types of event.
द फर्स्ट वन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता है, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल। एन इवेंट विच कैन नेवर अकर इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। एग्जाम्पल, in an experiment of rolling a dice, getting a number 0 on the uppermost face of the dice, it's an impossible event. अगर आपने डाइस को थ्रो किया और मैं बोलूं मेरा इवेंट है कि 0 आना चाहिए ऊपर, आएगा कभी 0? नहीं आएगा। क्यों? डाइस के ऊपर नंबर होता ही नहीं है 0, 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, तो आई विल नेवर गेट 0, so this is an impossible event. Similarly, one more example, in an experiment of rolling a dice, getting a number 7, it's also an impossible event, क्योंकि 6 से ऊपर के नंबर आ ही नहीं सकते हैं डाइस को मैं रोल करूंगी तो 7, 8, 100, 200, 9 ये सब कभी नहीं आएंगे, क्योंकि डाइस पे वो नंबर लिखे ही नहीं है। ठीक है, तो दीज आर इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट को भी डिनोट बाई 5। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल इवेंट। नल मीन्स जिसमें कुछ नहीं है, NULL। Impossible event is also called as null event or empty event. null event मतलब कुछ नहीं है इसमें, ऐसा जी सेट बनाया, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इम्पॉसिबल इवेंट विल बी 0, बिकॉज कुछ है ही नहीं उसमें, कोई भी पॉइंट नहीं है, तो N(5) विल बी 0. Then the certain event. What is a certain event? In a certain event is an event which will surely occur. जो आएगा ही आएगा. That is certain event. For example, if I throw a dice and I say that my event is getting any number between 1 and 6, तो वो तो होने ही वाला है ना। जब मैं डाइस को थ्रो करूंगी तो जो नंबर आएंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 6 के बीच में ही रहेंगे, तो दैट इज गोइंग टू हैपन, हमेशा होगा ही होगा। ओके, सो दैट इवेंट इज ए सर्टेन इवेंट। So certain event is actually nothing but the sample space itself. So मैंने जब event define किया तो how I have defined any subset of sample space. So if S is a sample space, S is also a subset of itself. Every set is a subset of itself. तो S itself will be called as a certain event. क्योंकि वो तो आने ही वाला है ना। जैसे आपने डाइस को थ्रो किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर मैं बोलूं मेरा इवेंट है गेटिंग हेड और टेल, तो वही ऐसी है वो, है ना। तो सैंपल स्पेस इज अ सर्टेन इवेंट। नाउ लुक एट द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, थर्ड वन। इफ A is any event from the sample space S, then non-occurrence of event A is called the complementary event, and it is denoted by A bar, A dash और A complement. Now complementary event का मतलब क्या है? सपोज ये मेरा सैंपल स्पेस है S और ये A है, तो नॉन अकरेंस मतलब जो A में नहीं है, that will be called as A complement. Look at the example. Suppose I'm in an experiment of rolling a dice, okay, or throwing a dice. Suppose मेरा ये experiment है, throwing a dice. I know what is the sample space of this experiment. Yes, I know 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. And suppose I define an event A here as A is an event of getting 6. यही मेरा event है. A is an event that when I throw the dice, I must get 6 on the uppermost face. So what is my event A? It is 6. I want to write down what is the complement of A. तो अगर मैंने डाइस को थ्रो किया और मुझे 6 नहीं आया, 1 आया, that means this event has not occurred. So which event it will go in? 1 will go in A complement. So it is complement of A is non-occurrence of A. A नहीं अकर हुआ है, तो इसमें जो A में नहीं है तो क्या क्या आ जाएंगे इसमें? 1, 2, 3, 4 and 5. ओके, सो ये देखो, ये मैंने आपको डायग्राम से बताया, ये एस सैंपल स्पेस है, ये ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब आउटसाइड, जो इसके बाहर है, ए के बाहर है, मतलब यहाँ यहाँ है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, जो ए में नहीं है। तो इसको भी हम ऐसे डायग्राम से बता सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is the sample space S and this is my event A. So what is A complement? जो इसके बाहर है, A के बाहर, A के बाहर क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. So A के बाहर है 1, 2, 3, 4, 5. If I am getting 1, 2, 3, 4 or 5 when I throw the dice, then A is not occur, क्योंकि A कब occur होगा? जब 6 आएगा, है ना। इसके लिए A complement is this. So basically A complement means जो A में नहीं है, ऐसे आप याद रखिए, ठीक है।
तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे. लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. So A will be 1, 2, 3. And I was telling you how to write down the complement of A. So A complement जो A में नहीं है, मतलब 2, 4, 6. So I hope you have understood this. So we can proceed further. So now you can do the homework problem, because again I have uh, repeated this for you. So in an experiment, अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया है. In an experiment of rolling a fair dice, write the complementary event of 5, 6. Now I'm in the experiment of rolling a dice, so I know what is my sample space. S is 1, 2, 3, 4, 5, 6. A is 5, 6. तो A complement में क्या होगा जो इस A में नहीं है. तो A में क्या नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है और 4 नहीं है. तो 1, 2, 3, 4 will go in A complement. Similarly, you can do this problems. Okay. Now let us define the probability of an event. So how we give the mathematically the definition of probability of an event. So if A is any event and S is a sample space of an event, of a random experiment, then probability of occurrence of event A is denoted by P of A, मतलब P for probability, and A is event. Probability of event A is defined as N of A divided by N of S, मतलब number of points in A divided by number of points in S. Okay. Then note, probability of any event, उसका जो value रहेगा, it will always be between 0 and 1. How? Let me tell you here in the next slide. Though nobody is going to ask you the proof of that, but you should know how you are getting. So we know that A is an event and S is a sample space. तो A और S में क्या relation होता है? S बड़ा सेट है और A उसका पार्ट है. ठीक है. तो A में जितने मेंबर होंगे वो डेफिनेटली S में जितने मेंबर होंगे उससे कम ही होंगे. So that is what I have written here. A is an event, मतलब A is a subset of S. So number of points in A will be less than or equal to number of points in S. And definitely number of points in A cannot be negative. So 0 is less than or equal to number of points in A less than or equal to number of points in S. Now I divide this by number of points in S, means N of S. So here I divide, so 0 divided by N of S, N of A divided by N of S, and right side में N of S divided by N of S. So यहाँ तीनों जगह पर मैं किससे divide कर रही हूँ? N of S से. Now 0 when you divide by any number, you get 0. And what is N of A divided by N of S? It is nothing but probability of A. Probability of A हम कैसे define करते हैं? Number of points in A divided by number of points in S. So this middle portion is nothing but probability of A. And what is this N of S divided by N of S? It will give you 1. Numerator में भी वही है, denominator में भी वही है, तो ये दोनों cancel हो जाएंगे and you will get 1, है ना? So that is how you are getting this result. Okay. 0 is less than or equal to probability of A is less than or equal to 1. So remember that probability of an event is always lying between 0 and 1. So this which I have highlighted is very important. It can come in MCQ. Now here I have solved some problems. Look at the first problem. An unbiased coin is tossed. Find the probability. An unbiased coin is tossed. Find the probability of getting head and getting tail. What is the chance? Probability का मतलब होता है chance. तो अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो कितना चांस है आपको हेड मिलने का और कितना चांस है आपको टेल मिलने का. Okay, so that is what we have to find out. So what we will do, first of all we will write down the sample space. You know that when the coin is tossed, the sample space of this experiment is H or T. Either it will go in head or in tail. So number of points in S is 2. अब मुझे क्या फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. पहले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी आपने कॉइन को टॉस किया, व्हाट इज द चांस दैट यू विल गेट हेड. सो लेट अस कॉल दैट एज एन इवेंट ए. सो लेट ए बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड. सो ए विल कंटेन व्हाट? ओनली एच, क्योंकि मेरा इवेंट क्या है? इवेंट इज गेटिंग हेड, सो ए इज एच. सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन ए? ओनली 1. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? व्हाट इज माय डेफिनेशन? Number of points in A divided by number of points in S. How many points are there in A? 1. Number of points in S, 2. So 1 divided by 2, that is nothing but 0.5. So probability of getting a head is 0.5. Your answer is between less than 1, right? Your answer should be less than 1. 0.5 is less than 1. आपका आंसर यहाँ पर probability किसी भी इवेंट का 1 से ज्यादा नहीं होगा. मैक्सिमम इट कैन बी 1 और 0 से छोटा भी नहीं होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा probability.
सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल? फिर हम कैसे करेंगे सॉल्व? लेट अस कॉल दैट एज एन इवेंट बी, लेट बी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल. ठीक है. Now write down what are the points in B. B is what? Getting a tail. So B will contain only T, tail. Number of points in B is 1. So what is the probability of B? Number of points in B divided by number of points in sample space S. So 1 divided by 2. So that is again 0.5. तो दोनों में हमें सेम आंसर मिल रहा है, 0.5, 0.5. अगर आप 0.5 को परसेंटेज में कैलकुलेट कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 50%. लुक एट आई हैव शोन हियर. इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो 50% चांस है कि आपको हेड मिलेगा और 50% चांस है आपको टेल मिलेगा. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल इज इक्वल, सेम. इसलिए जब कभी हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं तो हम कॉइन को टॉस करते हैं, क्योंकि सेम प्रोबेबिलिटी है दोनों की, हेड आने की भी टेल आने की भी. तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट जब क्रिकेट मैच होता है तो विच टीम विल गो फॉर बैटिंग एंड विच टीम विल गो फॉर बॉलिंग. इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब व्हाट दे डू, क्या करते हैं, एम्पायर क्या करता है, कॉइन टॉस करता है ना, क्योंकि देयर इज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल. तो जब हम खुद निर्णय नहीं ले सकते हैं तो वी टॉस ए कॉइन, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल, दोनों को इक्वल चांस देते हैं. ठीक है. तो इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, probability of getting head is also 0.5 and getting tail is also 0.5, or in percentage 50% chance is there that you get head and 50% chance is there that you get tail. Okay. So today we have seen only one problem, though I have prepared one more problem, but I think it is too much for today, so we will do it in the next class. So thank you so much.